Hello friends, welcome to the online physics class. In last lecture we have seen what are the observation of Hertz experiment. In last lecture we have seen what are the observation of Hertz experiment. In that we have seen what are the relationship between photoelectric effect with frequency, photoelectric effect with frequency and current, and lastly, we have seen that stopping potential is independent of intensity of light, but it is dependent on frequency of the light. Okay. Now, in today's lecture, we will see what are the failures of this wave theory. Initially, we seen that light have wave nature, but जब हमने ये ऑब्जर्वेशंस देखे तो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो वेव थ्योरी के assumption है वो बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं. तो ये क्या फेलियर थे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट वी हैव टू सी टुडे. For that we will see the PPT. Okay, now see over here, the name of the topic is failure of wave theory to explain the observation from experiments on photoelectric effect. Most of these observations could not be explained by the wave theory of electromagnetic radiation. First and foremost was the instantaneous emission of electrons on incidence of light. Wave picture would expect that the metal surface will absorb the incident energy continuously. Now see over here, according to wave theory, if we see, according to wave theory, whenever light incident on any metal surface, it absorbs the light. That was the assumption. But when we see through this experiment, what we observe, that there is instant transfer of energy. The energy given by the photon to the electron takes that energy and comes out of the surface. तो यहाँ पे वेव नेचर वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट वर्क कर रहा है. क्योंकि अगर हम वेव नेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर क्या है, इफ यू सी according to wave nature, the light should be get absorbed inside the metal. But over here, what is happening? Electrons are taking the energy from the photons and they are coming out from the surface. So by this we can say that light does not have only wave nature. Over here there is one more phenomenon. By this we can say that light also have a particle nature. और आपने देखा होगा, हमने वहां पे भी पढ़ा है कि इंस्टेंटली जैसे ही फोटोन हिट करेगा उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा. देयर इज नो लैग ऑफ टाइम और देयर इज वेरी वेरी लेस लैग ऑफ टाइम. मतलब बहुत इंस्टेंटेनियसली ये होता है फेनोमेनन. जैसे फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पे मेटल सरफेस पे हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी गेटिंग इमिटेड. ओके, देयर इज नो टाइम लैग ओवर देयर. देन लेट अस ट्राई टू एस्टिमेट let us try to estimate the time that will be required for photocurrent to start. We need to define the term work function of a metal for this exercise. Okay. Now we have to consider about a new thing which is called it as work function. Work function is the minimum energy required by an electron to leave the surface. आपने देखा होगा, हमने कंसिडरेशन किया था सरफेस के अंदर. अगर हम देखेंगे, if suppose we have surface over here,
and radiation is hitting like this. Then electron will jump out. Electron will jump out from the surface like this. What will be the energy of the radiation? That is h nu. E is equal to h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency of the radiation. Then this electron will come out. Are you getting this thing? Then now what thing happens over here? The electron needs some amount of energy. Okay, this electron need very small amount of energy, and that energy is nothing but what? Work function. Are you getting this thing? Now the thing is, if you see over here, if this is the surface, the radiation is hitting on the photosensitive material, the electron will come out, but this electron will need a energy. The minimum amount of energy required by this electron to move out from the surface is basically called as work function. इसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. हमने देखा था कि अगर रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हिट हो रहा है, if it is less than threshold frequency there will be no photoelectric effect. इससे समझ में क्या आ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस के अंदर है, जो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, it is not getting a sufficient amount of energy, therefore it is not coming out over here. तो below threshold frequency अगर आप रेडिएशन हिट करता है फोटोसेंसिटिव मटेरियल में, तो उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए. बट अगर वो उसको मिनिमम एनर्जी मिल जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इट विल कम आउटवर्ड, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड इट एज वर्क फंक्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके देन. Okay, then for that we will see the PPT. Okay then. The minimum amount of energy required be provided to an electron to pull it out of the metal from the surface is called the work function of the metal and is denoted by phi naught. तो यहाँ पे जो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को चाहिए सरफेस से बाहर आने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. बट अब उसका सिंबल क्या है? दैट इज phi naught. The symbol is phi naught. You can see over here the symbol is basically represented as phi naught. Next, values of work function of metals are generally expressed in the unit of energy called the electron volt. और इसको जो energy का unit हम use करते हैं that is electron volt. Okay? The unit for work function of a metal is basically electron volt. Symbol is small e capital V. Now we will move towards the next subtopic, which is Einstein postulate of quantization of energy and the photoelectric equation. अब आइंस्टाइन ने क्या किया है? According to this observation of photoelectric experiment or Hertz experiment, he concluded that light does not have the wave nature; it have basically dual nature, particle as well as wave nature. So according to that, he given certain postulates. What are they? The photoelectric effect is perhaps the most direct and convincing evidence of existence of photons. Albert Einstein received the Nobel Prize in Physics
in 1921 for explaining the photoelectric effect and for his contribution to theoretical physics. तो इनको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वर्क के ऊपर नोबेल प्राइज मिला 1921 में. तो यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स में हम देख रहे थे पहले एनसीटी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड देन बाकी कंसिडरेशन कर रहे थे. तो ये जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत बड़ा चेंज लेके आए. Einstein extended Planck's idea by deriving an equation which explained photoelectrics satisfactorily. He made two assumptions. तो जो प्लैंक्स के जो थ्योरी था उसके आगे प्लैंक्स के जो आइडिया को एक्सटेंड किया आइंस्टाइन ने और उसके बाद दो assumption पुट फॉरवर्ड किए. Radiation of frequency nu consists of stream of discrete quanta or photons and energy of each photon is h nu where h is the Planck's constant. बेसिकली उन्होंने क्या बताया, पहले जो वेव नेचर है लाइट का, लाइट वेव फॉर्म में नहीं है, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. क्वांटा डिस्क्रीट क्वांटा मींस कलेक्शन ऑफ photon particles. The packets of photons is basically called it as quanta. और इनके अंदर जो एनर्जी होती है, फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी होती है, रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ h nu, where h stands for Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. When radiation of frequency nu is incident on photosensitive surface, there are collisions between the photons and the electrons in the atoms of the emitter. When the radiation of frequency nu is incident on photosensitive surface, there are collision between photons and the electrons in the atoms of the emitter. During such collision, the entire energy of the photon is transferred to the electron without any time lag. तो अब तक मैं जो समझा रहा था आपको कि अगर कोई सरफेस है आपके पास और सरफेस पे हिट करता है फोटॉन्स मींस रेडिएशन और वो जब हिट करेगा तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर करता है वो इलेक्ट्रॉन को. बाय दिस यू कैन से दैट दिस इज अ टाइप ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिकॉज़ टोटल एनर्जी इज गेट ट्रांसफर फ्रॉम फोटॉन टू इलेक्ट्रॉन्स. बट अगर उस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उतना मिनिमम एनर्जी मिलेगा तभी वो बाहर आ सकता है, और अगर उतना एनर्जी उसको नहीं मिलता तो इट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दैट सरफेस. इट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दैट सरफेस. एंड फॉर दैट यू नो दैट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड. तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि फोटोन पार्टिकल्स हिट करते हैं सरफेस में इलेक्ट्रॉन को जाके और पूरी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन जितना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा. नाउ सी वन ऑफ द एग्जांपल वो हियर कि like a kicker puts in energy all concentrated on the ball or electron. Blue kicker always kick in the same and harder than a red kicker always kicks. अब यहाँ पे बेसिक एक एक्टिविटी है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जो पर्सन है दैट इज रेडिएशन ऑफ लाइट. अब रेडिएशन आके क्या करेगा, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो अब यहाँ पे जो पर्सन है वो स्टैंड किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रेडिएशन ऑफ लाइट जो सरफेस पे हिट होने वाली है. तो अब ये पर्सन ने उसको वर्क फंक्शन दिया, मतलब मिनिमम एनर्जी दिया, तभी वो बॉल बाहर जा सकता है. अगर उससे कम एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. तो सेम फोटोन का भी वही है. If photon provides work function, then and only then electron can come outward from the surface. उससे नीचे अगर होगा तो वो बाहर नहीं आ सकता. Then see this, kick energy, top ones get out, bottom don't. Harder kick, shorter wavelength light, more get out. Okay, then now see over here what happens. जैसे किक किया तो उसके बाद उसको एनर्जी मिला, मिनिमम वर्क फंक्शन मिला, इसलिए वो सिर्फ बाहर निकला. लेकिन वो बॉल आपको बाहर जाते हुए भी दिखा, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर जाते हुए भी दिखा है. तो वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर कि एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिला है वर्क फंक्शन के ऊपर भी. तो वर्क फंक्शन के ऊपर अगर एनर्जी होगा तो बाहर निकलने के लिए थोड़ा एनर्जी लगेगा और उसके बाद का एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा.
In this second case, what is happening? The energy given by the photons or that person is nothing but what is equal to work function, minimum work function. तो उतना ही एनर्जी मिला इसलिए वो बाहर आया। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो और आपको अगर थिएटर के अंदर जाना है तो यू शुड नीड दैट अमाउंट ऑफ द टिकट। अगर आपके पास वो टिकट के पैसे नहीं होंगे तो आपको थिएटर में कोई एंटर नहीं करने देगा। तो वो मिनिमम अमाउंट का टिकट के पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ टिकट के जैसे पैसे हैं 150 रुपीज है और 150 रुपीज से आपने टिकट लिया तो आप कैंटीन के पास नहीं जाओगे बिकॉज यू नॉट हैव एक्स्ट्रा मनी। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है 200 है 250 है तो यू कैन यूज दिस 100 रुपीज फॉर डिफरेंट स्टफ्स। तो यहाँ पे भी सेम होगा। अगर मिनिमम वर्क फंक्शन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन से बाहर आएगा और रुक जाएगा, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा उसको वर्क फंक्शन के ज्यादा, वो किस में कन्वर्ट होगा? दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो उस मोशन से आगे की तरफ जाएगा। बट सपोज आपके पास अगर 100 रुपीज है तो कैन यू गो फॉर दैट मूवी? नो। सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन द सरफेस कि अगर मिनिमम वर्क फंक्शन मिलेगा तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आएगा, उससे ज्यादा मिला तो जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे कम होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट फ्रॉम दैट सरफेस, वो सरफेस से बाहर ही नहीं आने वाला। See this in the next case what happened over here? Basically when there is kick it is not coming out, but over here it is coming out. See this, it come downward, means the energy provided by the photon particles to the electron is less than work function। और वर्क फंक्शन से कम होगा तो वहां कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी विल बी एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द किक बाय द फोटोन पार्टिकल्स। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने एक पर्सन शो किया है, बट दिस पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग द रेडिएशन ऑफ लाइट। जो भी एनर्जी रेडिएशन ऑफ लाइट से मिलेगा माइनस उसका पोटेंशियल एनर्जी बाहर निकलने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए mgh, तो वो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने माइनस कर दिया तो जो बचा एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। A photon is not a material particle but quanta of energy, collection of energy है, सिंगल पार्टिकल नहीं है, एनर्जी का कलेक्शन है पैकेट्स के फॉर्म में। The absorbed energy h nu by electron from incident photon is used two ways। अब जो एनर्जी h nu है वो दो वे में यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन मिनिमम और बचा हुआ एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी यूज्ड टू गिव काइनेटिक एनर्जी, टू गिव काइनेटिक एनर्जी। A part of this energy is used by the electron in liberating itself from the atom or the surface। Definition of photoelectric work function: the minimum energy required to free electron from a given surface is called photoelectric work function phi naught of the material of the surface। तो ये मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। अगर ये समझ आ रहा है तो आपको चैप्टर में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन द रिमेनिंग एनर्जी दैट इज h nu minus phi naught appears as a kinetic energy। अभी h nu एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? दो पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन phi naught और काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा तो व्हाट विल बी दैट? दैट इज h nu minus phi naught, टोटल एनर्जी गिवन बाय फोटोन पार्टिकल माइनस वर्क फंक्शन। तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो किस लिए यूज हो रहा है? फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ सी दिस इक्वेशन, द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h nu phi naught। तो अब हम यहाँ पे स्पेशल केस कंसीडर करेंगे जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है, उसके लिए अगर हम कंसिडरेशन करें तो दैट विल बी हाफ ऑफ mv max स्क्वायर। हमने देखा था एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे कि जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाता है कलेक्टर प्लेट पे, आता नहीं है ड्यू टू हैवी नेगेटिव पोटेंशियल, दैट विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे कंसिडरेशन हमको जो काइनेटिक एनर्जी करनी है वो किसकी करनी है? जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो half of v max square means the electron which have maximum kinetic energy is equal to h nu minus phi naught, where h nu is the energy of the radiation
of photon, and phi naught is work function. इक्वेशन 2 इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो ऊपर का इक्वेशन है ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यू हैव टू लर्न इट for your board examination point of view. Half of mv max square is equal to h nu minus phi naught is basically Einstein's photoelectric equation, which is very important. Also from equation 1, from equation number 1, we know that half of mv max square is equal to v naught e v naught, where v naught stands for stopping potential, e is the magnitude of the charge of electron. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 and 1, you will get e v naught is equal to h nu minus phi naught, where m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर m is मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर हमने इक्वेशन में देखा था, v max is maximum velocity of electron and v naught is the stopping potential. Don't be confused with these v's. V max is maximum velocity of the electron and v naught is stopping potential. Now the characteristics of the photoelectric effect with the help of Einstein's photoelectric equation as follows. If the frequency of incident radiation is decreased, the kinetic energy of photon also decreases, and finally it becomes zero for a particular frequency. That is nothing but what nu naught is called it as threshold frequency. Now we have seen that the minimum frequency at which photoelectron effect happens is basically called it as threshold frequency. तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बाहर आया है, तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसमें मोशन ही नहीं है, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी जीरो, ऑब्वियसली दैट विल बी जीरो. देन व्हेन न्यू means frequency is threshold frequency, nu is equal to nu naught, kinetic energy will become zero because इसमें सिर्फ उसको मिनिमम एनर्जी मिल रहा है बाहर आने का, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रहा है फॉर काइनेटिक एनर्जी. देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 में हम हाफ ऑफ mv max square is equal to h nu naught minus phi naught में इसको पुट करेंगे, तो इसमें पुट किया, न्यू की जगह न्यू नॉट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह जीरो आ जाएगा. नाउ सी इक्वेशन नंबर 4, phi naught is equal to h nu naught, where phi naught is work function, photoelectric work function of the surface, h is the Planck's constant, and nu naught is threshold frequency of that surface. Are you getting this thing? Now we derived one formula for work function. Einstein equation can be expressed. अब हम Einstein equation में क्या करेंगे, half of mv max square is equal to h nu minus phi naught था, तो हम प्रीवियस इक्वेशन से phi naught की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो phi naught की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, phi naught की जगह h nu phi naught, प्रीवियस इक्वेशन से वैल्यू पुट किया, दोनों में h कॉमन है, h को कॉमन निकाल दिया आउटसाइड. Now h is common outside. Half of mv max square is equal to h nu minus nu naught. So it is clear from the equation, if nu is greater than nu naught, photoelectrons emitted with some velocity. अब यहाँ क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा मिलेगा, वर्क फंक्शन वाला तो सिर्फ बाहर आने में यूज हो जाएगा, एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी, but these are what the cases. If the frequency of the radiation is greater than threshold frequency of that surface, then this electron will have certain velocity. If nu is equal to nu naught, photoelectron just emitted with zero kinetic energy. तो अब क्या होगा, सिर्फ उसको वर्क फंक्शन मिलेगा, मतलब सिर्फ एनर्जी बाहर निकलने के लिए मिलेगी, तो उसमें कोई वेलोसिटी होगा नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट विल बी जीरो. If nu is less than nu naught, no photoelectrons emitted. और exactly less than है, work function ही नहीं मिला, तो electron will not come out from that surface. Are you getting this thing? According to the quantum theory, a more intense beam contains larger number of photons. जितना ज्यादा intensity होगा, intensity will be related with large number of photons. तो इससे हमको पता है, अगर सिर्फ हम photon intensity बढ़ाएंगे तो photoelectric effect नहीं होगा. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम कंडीशन है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बट वी नो वन मोर थिंग, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
what will happen? Photoelectric current also increases, but it increases linearly, which we have seen in previous lecture. Consecutively, the number of collisions between photons and electrons increase and more photoelectrons are emitted. और वही केस जो मैंने अभी बताया, जितने ज्यादा photons पार्टिकल बढ़ेंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और उससे उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंक्रीज होगा. दिस एक्सप्लेन्स द इंक्रीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर. As above threshold frequency, as we goes on increasing the intensity, photoelectric current also increases. It increases linearly. As the photoelectric work function phi naught h nu naught is constant for a given emitter or a metal surface, equation number 6 shows that maximum kinetic energy of the photoelectron increases with frequency of the incident radiation and does not depend upon the intensity of incident radiation. So by this we can say that kinetic energy is directly dependent on frequency. It does not depend on the इंटेंसिटी. इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वजह से वर्क फंक्शन और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. बट इंटेंसिटी के केस में नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स हैं, एनर्जी की बात नहीं है यहाँ पे फोटोन पार्टिकल्स ज्यादा है. तो देयरफॉर यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. Therefore kinetic energy can also be written as h in the bracket nu minus nu naught. This is the sixth equation. Emission of photoelectrons is the result of collision between electrons and photons. As soon as the radiation is incident on the photosensitive surface, collision occurs and photoelectrons are emitted. अब ये emission क्यों होता है? Collision between photon और electron हुआ इसलिए तो emission हुआ है. और ये क्या है? एकदम instantaneous होता है. As soon as जैसे radiation hit हुआ उसी टाइम पे होता है. There is no time lag between them. If there is time lag, this is very very small. The moment incident radiation cut off, there is no emission of photoelectrons. जैसे ही आपका इंसिडेंट रेडिएशन वहां स्टॉप हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, क्योंकि लैग ही नहीं है. जब तक इनपुट है आउटपुट उसी इंस्टेंट पे मिल रहा है. अगर इनपुट बंद हो गया तो आउटपुट भी उसी इंस्टेंट पे क्लोज हो जाएगा. दैट इज द केस. सी द एग्जांपल ऑफ योर होम. आप जैसे ही बल्ब ऑन करते हो तो इंस्टेंटली ऑन हो जाता है जब तक सप्लाई है. बट जैसे ही आप उसको ऑफ करोगे तो क्या होगा? वो इंस्टेंटली ऑफ भी हो जाता है. सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. Instantly. See, we can see one more example related to this photoelectric function. आपके घर में अगर एक बड़ा टेलीविजन है और उसको हैवी वोल्टेज की जरूरत है, कम वोल्टेज होगा तो टेलीविजन चालू नहीं होगा. Are you getting that thing? तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी हो गया तो फ्रीक्वेंसी से कम है तो there will be no photoelectric effect. वैसे ही टेलीविजन ऑन नहीं होगा. और appropriate मिला तो there will be current and there will be television will be on. Same there will be photoelectric effect. तो जो मिनिमम होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यहाँ पे है. और ये चीज इंस्टेंटली होती है. जैसे लाइट ऑफ होगा वैसे टीवी भी ऑफ हो जाएगा. तो यहाँ पे इमिशन भी बहुत इंस्टेंटली होता है. जैसे रेडिएशन ऑफ होगा करंट का इमिशन भी, वहां इलेक्ट्रॉन का इमिशन रुक जाएगा और करंट भी डायरेक्टली जीरो हो जाएगा. ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट वेव particle duality of the electromagnetic radiation, because in this lecture we have seen, or in the previous lecture we have seen, light does not have only wave nature, it have particle as well as wave nature. Therefore in next lecture we will see about the duality of the light, how it can behave as a particle as well as a wave nature for certain things. If you have any doubt regarding this topic, you can ask us on WhatsApp groups. If you don't understand this topic, see this videos 2 to 3 times. Then it will be easier to you to understand this topic. Okay, thank you.